Go to the next question. Question 3b. Regionalism in India after 47 was occasioned by developmental imperative as much as linguistic particularism elucidate. It is a question of elucidate type, a very simple question. इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं. A very standard, very typical, very mainstream question. You could have attempted it very easily. देखो, whenever you talk of regionalism, उसके दो ही सोर्सेस होते हैं. एक होता है एक्सेसिव प्राइड in culture, in one's own culture, and second is relative deprivation. गरीबी हो प्रैक्टिकली, एब्सोल्युटली और रिलेटिवली. तो इन केस ऑफ फर्स्ट आपके पास क्या होगा? लैंग्वेज आएगा. विल हैव इश्यूज ऑफ आइडेंटिटी इश्यूज. फॉर एग्जांपल लैंग्वेज. सेकंड में क्या आएगा? जॉब्स, इनकम, पॉवर्टी, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है. सो सिंपल इतनी बातें हैं. तो यू कैन स्टार्ट दिस आंसर बाय सेइंग दैट फ्रॉम द होम रूल प्लेटफॉर्म तिलक ने कहा था विल हैव लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड दैट रिमेन द कंसिस्टेंट कॉन्क्रीट एजेंडा. But after 47 partition, that went on back burner due to the stability of nation. However, you will see that people were not ready. फजल अली आयोग हमें पता है. AP was formed after Potpish Ramulu in 1956. Then we have Act also. Act में कुछ और स्टेट बन जाते हैं. In 1960 में महाराष्ट्र गुजरात वाला इशू. In 1960s में you have पंजाब सुबह मूवमेंट, पंजाब बनता है बाद में. So you have different states. You can go chronologically also. That is one way of answer writing, chronologically, and every juncture you mention what are the reasons. Some of them are economic, some of them are cultural, and then you can come to post 1991 से कि भाई देखो पहले culture was intrinsic, economy was intrinsic. Now a culture is instrumental, economy is still intrinsic. आज के दिन में जो मूवमेंट होते हैं आफ्टर 91, इसमें कल्चर का तो इस्तेमाल किया जाता है लोगों को साथ में लाने के लिए, बट कारण जो होता है प्राइमरीली इकोनॉमिक ही होता है. नो प्योरली कल्चरल मूवमेंट्स एज सच. तो यू कैन कम टोटली लाइक दिस. और दूसरा तरीका ये हो सकता है, यू कैन जस्ट मेक अ टेबल कि भाई डेवलपमेंटल इम्परेटिव एंड यू हैव लिंग्विस्टिक इश्यूज, कल्चरल इश्यूज, एंड यू कैन गिव एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल यू हैव backwardness. You can talk of the 3 states getting formed. We have Jharkhand, Chhattisgarh, Uttarakhand, etc. You can talk about the regional economic dimension within the states also, which is still unresolved. You can come to the north. You can, in case of language, you can have the state organization based on linguistic formula. You can have the issues of linguistic assertions also, like Dravidian identity. You have Assam movement, all those movements also. Then you have third point about linguistic is a language as a cultural identity issue being used to mobilize people to garner votes to form regional parties, and give the examples of regional parties based on language, Shiv Sena वगैरह. So you can have different structure, either the tabular one or the chronological one. इस क्वेश्चन में ज़्यादा कोई मुश्किल आपको होने वाली है नहीं, बट इसको कंक्लूड करते समय यू हैव टू मेंशन दैट इंडिया में यू हैव यूनिटी इन डाइवर्सिटी. Unlike what happened in Pakistan over Bangladesh issue, or unlike the civil war that happened in Sri Lanka over imposition of Sinhalese over Tamilians, India में वो नहीं हुआ. We have some issues, but they were quite easily, relatively easily accommodated in the framework of Indian Constitution because of India not being a kind of cultural state. And secondly, we took many efforts. We have 5th schedule, 6th schedule, special assistance, special package demand, special state. We have finance commission, we had the planning commission, subsidies and whatnot. So financially, to improve the areas where we have backwardness by investing industry, special package, etc. And culturally by not imposing cultures, and regarding the autonomy respectively. हमारे यहाँ कोई भी प्रॉब्लम वहाँ तक नहीं गया
जहाँ पे इट विल टर्न इनटू सेसेशनिस्ट मूवमेंट। सो डेमोक्रेसी का सक्सेस है, बस वहाँ पे आप कंक्लूड कर सकते हो।